Good morning, children. Class 8th. Uh, we are doing chapter number 6, Operation on Algebraic Expressions. Okay, we have done up to exercise 6C. In first exercise, we have learned how to write algebraic expression and addition and subtraction. And then in third exercise, we have done multiplication and division of algebraic expressions. Okay, so now today we will learn identity. Okay, identities, algebraic expressions, identities, basically 3 or 4 identities are used in this chapter. Okay, we will learn about that, those identities only. First identity is a plus b whole square. Okay, it is equals to a square plus 2ab plus b square. This is first identity. Okay, second identity is a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. And third identity is a square minus b square. Okay, that is equals to a plus b and a minus b. Okay, so these are the identities which are used in this exercise. Okay, now these are identities, but how we get this? In this left hand side and right hand side both are equal, but how? Let us find how we can get a plus b whole square as how we can write it as a square plus 2ab plus b square. तो ये हमें कैसे मिला? Let's solve it first. Okay, so a plus b whole square, what does it mean? कि we can write it as a plus b and a plus b square अगर किसी का है तो we can write it twice, 2 times हम लिख सकते हैं. अब ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हमने अलजेब्रा में ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है कि फर्स्ट पार्ट पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. ओके, सो फर्स्ट टर्म हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड ब्रैकेट, कम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. देन सेकेंड टर्म will be multiplied by the second bracket. Okay, now a multiplied by a, that will be a square, a multiplied by b plus 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 a into b will be ab. Okay, now b into a will be again ab, b ए नहीं लिखेंगे हम, a b लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे हम. ठीक है, देन b into b plus 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 that will be b square. Okay, now a square and b square that has to be written as it is because इनका कोई like terms नहीं है, but these are 2 like terms, एक जैसी हैं बिल्कुल. so 1ab and 1ab, that is 2ab. ठीक है, इधर यू कैन राइट इट लाइक दिस, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab बिकॉज ये मिडिल टर्म्स है, प्लस b स्क्वायर, बोथ आर राइट. ओके, यू कैन राइट इट इन दीज 2 वेज. तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको स्क्वायर को आपको एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड करके देन ब्रैकेट्स जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आइडेंटिटी. ओके, नाउ विल लर्न इट्स एप्लीकेशन. अब इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ हुआ है? फॉर एग्जाम्पल x plus 3, okay, now what will be its answer? So it is a plus b whole square है. Okay, we can write it as a plus b whole square where a is equals to x and b is equals to 3. a is equals to x and b is equals to 3. So what is the expanded form of a plus b whole square? That is a square plus 2ab plus b square. It is a square plus 2ab plus b square. In place of a we will write x का square plus 2. In place of a again we will write x, in place of b we will write 3 and plus 3 square. Okay, now x square will be x square only plus 3 2s are 6x plus 3 square, 3 3s are 9. Okay,
This is the answer. Okay. Now second identity. Now second identity is a minus b whole square. That is a square minus 2ab plus b square. अब ये कैसे आया? ओके, तो क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल एक्सपेंड इट. a minus b whole square can be written as a minus b, a minus b. ओके, नाउ फर्स्ट ब्रैकेट को, फर्स्ट टर्म को आप लिखेंगे एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड ब्रैकेट. ओके, देन सेकेंड टर्म माइनस बी को उसके साइन के साथ लेके आना. ठीक है, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. नाउ ए मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज ए स्क्वायर. दिस इज प्लस माइनस माइनस, a into b will be ab. Okay, now minus plus will be minus, a into b will be ab. Now next is minus minus plus, b into b will be b square. So it is a square, then minus ab and minus ab, 1ab 1ab 2ab minus 2ab and b square. This is our identity. Okay, so what will be the expanded form of a minus b whole square? That will be a square minus 2ab plus b square. Okay, now let us solve one example. Okay, that is x minus 2 whole square. Okay, so x minus 2, we can suppose that a is equals to x and b is equals to 2. Okay, so x minus 2 whole square will be, it will be a square minus 2ab plus b square. Okay, in place of a we will write x square minus 2, in place of a we will write x, in place of b we will write 2 plus 2 square. Okay, so now x square minus plus minus 2 to the 4 x and 2 to the 4, 2 square is 4. Okay, now third identity. Our third identity is a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. Means if a plus b and a minus b is given to us, it will be a square minus b square. ठीक है, अब ये कैसे आया? ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस ब्रैकेट. इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट टर्म हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड ब्रैकेट, a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, then plus b multiplied by a minus b. Okay, a into a will be a square plus minus minus a into b will be ab. Okay, now again plus plus plus, a into b will be ab, then plus minus will be minus, b into b will be b square. Okay, now a square इसका कोई like terms नहीं है, similar terms नहीं है, तो as it is we will write it as it is. Now minus ab and plus ab equal and opposite cancel हो जाएंगे. Okay, ab minus ab will be 0, nothing left. Okay, minus b square. Okay, so this is our answer. So whenever a plus b and a minus b is given, we can write it as a square minus b square. Now its application. Okay, x plus 2 and x minus 2. Okay, x plus 2 and x minus 2, what will be its answer? It will be, it is like a plus b and a minus b. Okay, that is equals to a square minus b square. In place of a we will write x and in place of b we will write 2. Okay, so it will be x square, we have to use this one, x square minus 2 square, that will be x square will be x square and 2 to the 4. Okay, this is the answer. Now let us start exercise 6D. Question number 1 is find each of the following product.
अब इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी विल जस्ट यूज द आइडेंटिटीज ओनली. ओके, सो plus and plus. Okay, both the brackets are similar. It is similar to a plus b, a plus b, a plus b, a plus b के similar है. a plus b, a plus b क्या होता है? a plus b whole square. It will be a plus b whole square. So what is the expanded form of a plus b whole square? a plus b whole square can be written as a square plus 2ab plus b square. Okay, now in place of a we can write x, a is equals to x and b is equals to 6. So now put these values in this equation. In place of a we will write x square plus 2. In place of a again we will write x. In place of b we will write 6, and in place of b square means 6 square. Okay, x whole square, that is x square, plus 6 to the 12 x plus 6 square, 6 6 the 36. So the answer will be x square plus 12x plus 36. Okay, okay, now fourth part is 2 by 3x plus 4 by 5y, 2 by 3x plus 4 by 5y. So it is also like a plus b, okay, that is a plus b whole square. Again its expanded form will be a plus b whole square will be equals to a square plus 2ab plus b square. So in place of a we will write 2 by 3x. In place of b we will write 4 by 5y. Okay, so now put these values in this. Okay, so it will be 2 by 3x whole square plus 2 ये formula का है, so you cannot change it, you have to write it as it is. In place of a we will write 2 upon 3x. In place of b we will write 4 upon 5y plus b square, that is 4 upon 5y whole square. Okay, so now 2 upon 3x whole square, that will 2 square will be 4, 3 square will be 9 and x square will be x square plus 2 to the 4, 4 4 the 16. न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा. ओके, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर. So 2 to the 4, 4 4 the 16 and denominator will be multiplied by denominator. So 3 5 the 15 and algebraic terms expressions with x multiplied by y, that will be xy. Okay, plus 4 upon 5y whole square, that is 4 square, 4 4 the 16, 5 square that is 25 and y square. Okay, this is our answer. Now question number 2 is also find each of the following product, but you will find that there is a difference in this question. In this question there is minus sign and in the previous question we have used plus sign. Okay, plus sign पे based questions थे. So now if there is minus sign, so it is a minus b and a minus b, both the brackets are similar. Okay, that will be a minus b whole square. Okay, so a minus b whole square की आइडेंटिटी क्या है? दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, जब माइनस आ जाता है तो इसमें आइडेंटिटी में माइनस आ जाता है इस मिडिल में. ओके, मिडिल टर्म में माइनस साइन है. सो a इज इक्वल्स टू x है एंड b इज इक्वल्स टू 3/x. ओके, so now just place these value in this expanded form, that will be x square minus 2. In place of a we will write x, in place of b we will write 3/x, and place of b square we will write 3/x whole square. Okay, so now x square will be x square only, minus plus minus 3 to the 6 x
is cancelled by x. Okay, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, दिस वन इज इन न्यूमरेटर एंड दिस वन इज इन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, बट न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो सकते. ओके, सो नाउ 3 square will be 9 and x square will be x square only. Okay, so the answer is x square minus 6 plus 9 by x square. Okay, next, sixth part of the question is 1 by 2 y square minus 1 by 3 y, 1 by 2 y square minus 1 by 3 y. Okay, so it is again a minus b whole square, because a minus b and a minus b 2 times same, so it is a minus b whole square. That can be written as a square minus 2ab plus b square. Okay, in place of a we will write 1 upon 2 y square and in place of b we will write 1 by 3 y. Okay, जो अगर स्क्वायर है तो आपको उसको स्क्वायर को साथ में ही लेना है. ठीक है, सो नाउ वी विल प्लेस ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ए स्क्वायर 1 by 2 वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, बिकॉज ये पूरा एक टर्म है, दैट इज ए. ओके, माइनस 2 in place of a we will write 1 upon 2 y square, in place of b we will write 1 upon 3 y, and b square, that is 1 upon 3 y whole square. Now open this bracket, 1 upon 2 का square that will be 4, y square का square that will be y raised to power 4. Okay, minus numerator can be multiplied, बट अगर कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर से तो यू कैन कैंसिल इट, लाइक 2 1s are 2, 2 1s are 2, इट कैन बी कैंसल्ड. ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर 1 by 3 y square multiplied by y, so it will be y cube. Okay, and plus 1 square will be 1 and 3 square will be 9, y square will be y square. This is our answer. Okay, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सपेंड. आपको उसको एक्सपेंड करना है, मीन्स जो आइडेंटिटी का जो सेकेंड पार्ट है, मीन्स RHS साइड आपको लिखना. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सपेंड वेयर 8a plus 3b होल स्क्वायर इज गिवन. सो अब a और b गिवन है तो वी विल नॉट यूज a एंड b इन आइडेंटिटी, वी विल यूज x एंड y. ओके, सो इट इज x plus y होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy plus y square. Why we have used xy? because ab ऑलरेडी है, तो ab और ab फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको. ठीक है, सो इट विल बी x plus y होल स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 8a, इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट 3b. ओके, सो नाउ पुट इट इन दिस इक्वेशन, दैट विल बी 8a होल स्क्वायर प्लस 2, x की प्लेस पे आप लिखेंगे 8a and in place of y we will write 3b plus y square, that is 3b square. Okay, 8 square that will be 64, a square plus 8 to the 16, 16 3s are 48, it will be 48 a into b ab plus 3 3s are 9 b square. This is the expanded form. Okay, बस आपको चेक करना है, देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगती है. विथ साइन, आप साइन से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगर प्लस है तो यू विल यूज़ आइडेंटिटी a प्लस बी, एंड अगर माइनस है तो आप माइनस वाली a माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. अगेन देखो a अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन a होल स्क्वायर, तो इसमें भी प्लस है, यानी प्लस वाली आइडेंटिटी होगी. इट विल बी x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर plus 2xy plus y square. In place of x we will write a upon 2, in place of y we will write a 2 upon a. Okay, so now put all this value in this equation. X square, that is a upon 2 whole square plus 2 a upon 2, that is a upon 2, 2 upon a, in place of y we have written this, plus y square, that is 2 upon a होल स्क्वायर. ओके, दैट इज a स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4.
plus 2 is cancelled by 2 and a is cancelled by a. What is left here? Only 2. Okay, plus 2 square, that will be 4, and a square will be a square. Okay, this is our answer. Now seventh part of the question is x square y minus yz square whole square. Again अब आप एक्स वाई है तो ए बी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. तो दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. Okay, so in place of a we will write x square y, in place of b we will write yz square. Now put the values in this equation. So it will be x square y whole square minus 2 x square y, in place of b we will write yz square, in place of b again we will write yz square whole square. Okay, so x square will be x square plus x square होल स्क्वायर है तो इट विल बी 2 इंटू 2 4, पावर हो जाएगी 4 y स्क्वायर. ओके, नाउ 2 और नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं है, तो ओनली 2. एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो इट विल बी एक्स स्क्वायर ओनली, बट y मल्टीप्लाइड बाय y इट विल बी y स्क्वायर, एंड z का कोई कंपेनियन नहीं है, सो z विल बी रिटन एज इट इज, प्लस y स्क्वायर दैट विल बी ओके होल स्क्वायर, इसलिए y का स्क्वायर हो गया, बट z स्क्वायर का स्क्वायर है, दैट मीन्स z रेज टू पावर 4. ओके, so now this is the solution, this is the whole solution. Now question number 4 is again find each of the following product. आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, बट हेयर यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट ब्रैकेट इज a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट इज a माइनस बी. So a plus b and a minus b, its identity will be a square minus b square. Okay, so now in place of a we will write x and in place of b we will write 3. Okay, आपको देख के आइडेंटिफाई करना है which identity we can use here. Okay, so now put this value in this. So in place of x a we will write x square and minus sign is there. In place of b we will write 3 square, so it will be x square minus 3 square will be 9. Okay, now second type of question is in which rational number or fraction के फॉर्म में अगर given हो, I am solving 8th part of the question, that is 1 upon x plus 1 upon y. Okay, and second bracket is 1 upon x minus 1 upon x minus 1 upon y. These are the two brackets. So it is a plus b and a minus b, that is equals to a square minus b square. Okay, a is equals to 1 upon x and b is equals to 1 upon y. Okay, now put these values in the equation. In place of a square we will write 1 upon x whole square minus, in place of b we will write 1 upon y whole square. Okay, so 1 square of 1 will be 1 only, but square of x will be x square, minus square of 1 will be 1 only, square of y will be y square. Okay, अब आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, so this is the answer. So this is the third identity which we have used here. Okay, in question number 1 we have used first identity, in question number 2 we have used second identity, and in question number 4 we have used third identity. In question number 3 we have used both first and second identities. Okay, so now your homework is solve remaining part of question number 1, 2, 3 and 4. Okay, that solve it in your notebook. Thank you.